क्लास 9 एंड 10 स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर और नंबर लाइन, सेकेंड क्लास और नंबर सिस्टम। अब सबको पता है कैसे नंबर को प्लेस करेंगे ऑन द ग्राफ पेपर, इवन ऑन पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। इंटीजर नंबर +2, +3, -2, -3, 0, ऑल दिस थिंग्स यू नो। लेकिन रैशनल नंबर क्या होता है? आई देवाशीष अगेन फ्रॉम देव्स लर्निंग हब, माई यूट्यूब चैनल देव्स लर्निंग हब एंड माई फेसबुक पेज टू देव्स लर्निंग हब. So it will be a very interesting session, very short one, right? But you will have 100% clarity with respect to your understanding. So what is the definition of rational number? Any number जिसको आप p by q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, जहां पे p and q both are integers. It could be positive integer or negative integer, but q not equals to 0. That is the denominator is not equals to 0. ऐसा ही तो rational number है. तो रैशनल नंबर कोई भी नेचुरल नंबर वो भी रैशनल नंबर है, बट आई विल नॉट शो यू हाउ टू प्लेस नेचुरल नंबर, राइट? दैट यू नो ऑलरेडी, राइट? यहां पे हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर को, मतलब फ्रैक्शन को, ये हो सकता है नेगेटिव और पॉजिटिव, राइट? सो पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर विथ फ्रैक्शन कैसे हम लोग प्लेस कर सकते हैं। सो आपको पहले जो करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई द बाउंडरीज, मतलब जो रैशनल नंबर को प्लेस करने के लिए बोल रहे हैं वो कौन दो नंबर का बीच में, जो हम लोगों का जो नंबर लाइन होता है वो क्या होता है? जो जीरो का राइट साइड पॉजिटिव, दैट मीन्स इट इज +1, इट इज +2, आई एम नॉट राइटिंग द साइन अगेन, it is 3, it is 4, that is how, and the left side it is -1, it is -2, it is -3, that is how, right? So when any rational number you need to place on the number line, आपको देखना पड़ेगा कौन दो नंबर का बीच में है ये, ठीक है ना? सो आइडेंटिफाई द बाउंडरीज फर्स्ट। अगर आपको बोल रहे हैं जो एक नंबर है दैट इज 3/5, यहां पे डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, मतलब ये नंबर 1 से छोटा है लेकिन ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये दोनों चीज देखना पड़ेगा। जो उसका मतलब है ये जो नंबर है रैशनल नंबर, दैट इज इन बिटवीन 0 एंड +1 बिकॉज इट इज पॉजिटिव। अगर इसमें -35 बोलता तो ये कहां पे होता था? इन बिटवीन 0 एंड -1। तो बाउंडरी आपको पहले देखना पड़ेगा। सो 3/5 मतलब इट इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, इट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, मतलब कहां पे होगा? ये रीजियन पे होगा, इन बिटवीन 0 एंड 1। आप इसको बोल रहे हैं 3/5, तो क्या करना पड़ेगा आपको? जब नंबर लाइन में प्लेस करोगे तो ये जो रीजियन आपको बाउंडरी आपको पता है, वो रीजियन को जो डिनोमिनेटर बोल रहे हैं 3/5 मतलब 3 इक्वल पार्ट्स फ्रॉम 5 इक्वल पार्ट्स। सो 3/5 मतलब ये जो रीजियन आपको बाउंडरी पता है उसको 5 भाग से आपको इक्वल पार्ट से डिवाइड करना पड़ेगा। उसका बाद फर्स्ट 3 पार्ट्स यू नीड टू टेक। सो हाउ इट विल लुक लाइक? सो लेट्स से द नंबर लाइन लुक्स लाइक दिस, 0, देन राइट साइड ऑफ 0 +1, +2, and each side the left side it is -1, -2. So in between 0 and 1, so in between 0 and 1 डिनोमिनेटर कितना है? 5. So इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, 1, 2, 3, 4. So how many parts are there? 1, 2, 3, 4, 5, right? So 3/5 मतलब 5 इक्वल पार्ट्स जो है उसका फर्स्ट 3. So this is number 1, this is number 2, this is number 3. So this is what the point 3/5. This is what the point 3/5. This is what 3/5. Very simple. Just identify the sign and the boundary, right? अगर इस ये बोलेगा, मान लीजिए -3/5, उसका मतलब इन बिटवीन 0 एंड -1, देन यू नीड टू डिवाइड दिस पार्ट in 5 equal parts, 1, 2, 3, 4. So first 3 parts. So this one will be -3/5. Got it? और एक टाइप का दे सकता है, मान लीजिए दैट इज 1, 2/3,
1 2 by 3 means, you know, from fraction it is equal to 1 plus 2 by 3, right? So that means what are the boundaries, where the point lies, कहाँ पे है ये नंबर? 1 प्लस मतलब 1 से ज्यादा है लेकिन 2 से कम है, सो ये नंबर कहाँ पे होगा? इन बिटवीन +1 एंड +2. सो आपको 1 तक जाना पड़ेगा, उसका बाद 1 एंड 2 का बीच में स्पैन, इसको आप कितना पार्ट्स में डिवाइड करोगे? 3, बिकॉज 2 फ्रॉम 3 पार्ट्स, सो यू नीड टू डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स. You need to divide in between +1 and +2 into 3 parts. 1 and 2. So this is first part, this is second part, this is third part. So this is what 1 plus 2/3. 1, 2, 3 parts is here. So 1 plus 2/3. That means this is the point that represents 1 plus 2/3. That is equals to 1 2/3. Got it? Very, very simple. Any rational number, if you are asked to place, that is the only process. Identify the boundaries and the sign, then accordingly divide that part that is equal to the denominator of that part. Right? And when it is a mixed fraction, you represent with this plus sign. Let's say now you need to plot -2 3/5. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है, पहले इसको ब्रेक करो विथ रेस्पेक्ट टू प्लस, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 plus 3/5. So in the negative direction, so it is in between -2 and -3. So it is in between -2 and -3, where it will be in between -2 and -3. So how many parts you will divide it first? You will divide in 5 parts. So total 4. 1, 2, 3, 4, 5 parts. So now you will come -2 plus 3/5. That means you will come from 0 to -2. Then additionally you will go 3 parts, because here you have 1, 2, 3, 4, 5 parts. So you will take first 3 parts, 1, 2 and 3. So this is where your point will be. This point is -2 3/5. Got it? So I hope you understood very clearly. Any rational number that you can place on the number line in this way, right? So if you like this video, please click on the like button, and if you would like to have this kind of video again and again, please subscribe my YouTube channel Dev's Learning Hub and follow my Facebook page to Dev's Learning Hub. Thank you very much.